मुझे ठीक है, ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और अब आपको मैं होस्ट होस्ट बना देता हूँ। ओके सर, सो नाउ यू आर द होस्ट। अभी एक बार आप देख लीजिए कि आप रिकॉर्डिंग को पॉज या Okay, so I welcome you all to this session. In the last class, I'll just brief it once. We have discussed about the Carnot theorem. Now, what is a Carnot engine first? Carnot engine is the engine which is actually made up of all the reversible processes. Two processes are reversible isothermal and two processes are reversible adiabatic. What is the superiority in Carnot engine? I'll explain you that later. But before that, we'll just understand what Carnot said. Carnot ने कहा था कि रिवर्सिबल हीट इंजन जो कार्नोट साइकिल पे बेस्ड होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द इरिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर रिजर्वायर. मतलब टेम्परेचर रिजर्वायर सेम होना चाहिए. हाँ, जस्ट टू रिमाइंड यू दैट दिस इज just okay. So the real engines will always have a less efficiency as compared to Carnot engine working between the same temperature reservoir. And efficiency of all the reversible engine operating between the two same temperature reservoir is same. That is what we have seen in the last class. Today I'll start with lecture number 6. Okay. And we'll call it as 9. Today is 9. And I told you that patient, slowly and slowly things will get more and more clearer. Okay. More concepts will be discussed. First, we will understand what is the that has been given by the scholars. Okay. तो अगर देखें तो लास्ट क्लास में जैसे कि कहा कि कार्नोट सेड दैट इंजन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर रिजर्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर्स, राइट. अगर के बीच में कोई रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट हो रहा है तो एफिशिएंसी उसी के ऊपर डिपेंड करेगी. रियलिटी में ऐसा नहीं होता है. रियलिटी में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अपनी बाइक चला रहे हैं और सेम फ्रेंड सेम बाइक चला रहे हैं, सेम कंपनी की सेम बैच में बनी हुई, सेम डे बनी हुई, सेम रोड पे चला रहे हो, फिर भी दोनों बाइक की एफिशिएंसी अलग अलग होगी. बहुत सारे दूसरे ड्राइवर के इमोशंस पे डिपेंड करेगी, ड्राइवर के ड्राइविंग बिहेवियर पे डिपेंड करेगी. तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स ऑन विच द एफिशिएंसी विल डिपेंड अपॉन. Even the same driver is also driving two bikes will have different efficiency made on the same batch. Okay, so there are lots of variables when it comes to efficiency of a real heat engine, but for a reversible heat engine, the efficiency exclusively depends upon the temperature of reservoir. Okay, just to remind you that efficiency is 1 minus rejected on supplied. What is rejected and what is supplied? We have drawn this block diagram. This is a high temperature reservoir. Let's say this is reversible, giving some work output W. TL. Okay, this is what you have supplied. And this is what, and this is the cycle or the engine working on Carnot cycle, basically. And this is the approach. And what Carnot is saying that this efficiency is a function of TH and TL only for reversible, only for reversible. So
That simply means that 1 minus QR upon QS is a function of pH comma, or QR upon QS. Let us say that for this particular discussion we call it as QH, which is emerging from pH. It is a heat supplied only. And let us say that this is L, this is heat level. So can be called as QH upon QL is some function of pH. It can be proved, it can be derived. We won't be getting into this since we are preparing for competitive exams. That this QR upon QS or QH upon QL is equal. The simplest way possible. This is the simplest possible. pH upon. This is applicable only for. This is very important. Very important. Why this is applicable for reversible engine? Because efficiency is function of TH comma TL only for reversible. So therefore maximum efficiency would be equal to, say, benchmark मिल गया आपको T lower upon. This will act as a benchmark for you. So if I solve one example immediately, so there are various things I'll explain you right now. That let's say, okay, so before that, of course, I'll tell you one more thing. That before beginning to question, one important thing I like to make over here, that this temperature T is defined as absolute temperature and the scale, and it was said that मतलब इसे कहा गया कि जो कैसे फिक्स किया गया triple point of water. What is triple point of water? The point at which water, ice and vapor, all three can coexist, right? So triple point of water was 273.16 Kelvin. So Kelvin, since Kelvin made a great contribution, so in order to honor them, this was being written right, which was given a unit of Kelvin. And of course, it's 0.01 degrees Celsius. In Celsius size scale, it is 0.01 degrees Celsius, and this is the absolute scale. Absolute scale means it starts from zero and it can go till infinity. So the scale goes from zero to infinity. So second law forms the basis of absolute temperature scale also. How? In fact, I'll help you with the help of a numerical over here. Okay. So T is defined as the absolute temperature first of all in Kelvin. So whenever you take this ratio or you feed this temperature, it has to be feeded in Kelvin. That is very important. So how do we do it? Let us take one example. If 20 kilojoule heat is added to Carnot cycle at temperature of 100 degrees Celsius and 14.6 kilojoule heat is rejected at 0 degrees Celsius, determine the location of absolute zero example on the Celsius
मतलब क्या कह रहे हैं लोग, ये 100 डिग्री सेल्सियस, 20 kilojoule heat has been transferred to Carnot reversible engine, and this is 0 degree Celsius. How much heat is rejected over here? 14.6 kilojoule heat is rejected. So you need to determine the location of absolute zero on the Celsius scale. मतलब सेल्सियस स्केल में जीरो कहां पर होगा, एब्सोल्यूट जीरो मतलब माइनस व्हाट, लेट्स से फॉर एग्जांपल काम करते हैं, वी नो दैट दिस इज इन केल्विन राइट, सो इसे प्लस के ऐड कर और इसे प्लस के, तो ये अब केल्विन में कन्वर्ट हो, so 100 plus k upon 20, this is what we know from this absolute temperature scale, this is from the scale, this is the scale, okay, तो ये स्केल से हम लिख सकते हैं इस तरह से, 100 plus k, so let's solve for k, how much we are getting, let us understand that, so 14.6 into 100 plus 14.6 k equal to 20 k, so when we solve this, we'll get a value of k as 270.37. So what do we mean over here is that, ध्यान से देखिए, 100 plus 273.37, so basically 0 degree Celsius is 227.3 Kelvin. Okay, 100 degrees Celsius is 100 degrees 373.37 Kelvin, like that. Okay. So how much is 0 Kelvin is how much degree Celsius? This is the question. This is what they are asking. कि 0 केल्विन जो है वो कितना डिग्री सेल्सियस होगा, सॉरी 0 केल्विन इज हाउ मच डिग्री सेल्सियस, you can think of it. So if 0 degree is 270.37 केल्विन, so यहाँ पर आपको यूनिटरी मेथड नहीं यूज करना है क्योंकि ये प्लस में है, 100 में आपने प्लस किया, 100 डिग्री इज 373.37 राइट, so of course 1 Kelvin, yeah, 0 degree Kelvin will be minus 270.37. Sorry, 0 Kelvin. Kelvin के साथ डिग्री नहीं लगेगा यहाँ पे. 0 Kelvin will be minus 270.37 degree Celsius. So it's your scale कैसी होगी आपकी, माइनस 270.37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से चालू हो रही है, इससे इधर पॉसिबल नहीं है इसके, क्योंकि टेम्परेचर कभी भी 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता, तो यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, 0 केल्विन, दिस इज 0 केल्विन राइट, दिस इज 0 केल्विन, तो इससे पीछे नहीं जा सकता, मतलब माइनस 270.37 इज द मिनिमम. फिर आप यहाँ पे तो कहीं तक नहीं जा सकते, इन्फिनिटी आपके पास, फिर 0 डिग्री आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना, 273.37, लाइक दिस यू कैन 1000 के. तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था कि किस तरह से आपने डिफाइन किया है एक टेम्परेचर स्केल को. रियलिटी में क्या होता है, रियल स्केल जो होती है, ये तो एक एग्जांपल था, बट रियलिटी में हम डिफाइन कर दिया है. तो 0.01 डिग्री सेल्सियस इज 273.16 और
0 degree Celsius would be nothing but 273.17. Okay. So in reality, 1 Kelvin or 0 Kelvin is also minus 273.150. This is the scale. 0 Kelvin, मतलब it starts from minus 273.515 degrees Celsius and it goes to infinity. Minus 273.15 degrees Celsius से कम टेम्परेचर नहीं हो सकता. That's why we call it as absolute, क्योंकि 0 Kelvin से कम नहीं होता है. Absolute. 0 starts with 0, minus Kelvin temperatures नहीं होता. दिस वाज जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप ध्यान रखें. और दूसरी बात ये कि रिवर्सिबल के लिए ये एक फॉर्मूला आप सिर्फ रिवर्सिबल के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब हम इस एफिशिएंसी मैक्सिमम का मतलब समझते हैं क्या होता है. तो रियल स्केल एक बार बना देता हूं आपके लिए, जो रियल एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल है. व्हाट इज एब्सोल्यूट thermodynamic? I'll show you that. So basically, it starts with minus 273.15 degrees Celsius. This is 0 Kelvin, and then it moves further. There comes 0 degrees Celsius, of course. So here the temperature is 273.15 Kelvin. Then it moves further, and whatever you temperature want, 1000 degrees Celsius or whatever you can think of, all can be converted by adding 1000 plus 273. Any arbitrary temperature T in degrees Celsius will be thought of as adding T over. Okay. So basically, this is how we are dealing with such kind of scales. So it's absolute because it starts with 0, okay, and it goes till infinity. And of course, the ratio of two temperatures over here, जैसे कि for example, कोई भी दो टेम्परेचर ले लें, आपने 273.15 लेना है, और आपने जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लिया, आपने जैसे 100 डिग्री सेल्सियस लिया, 273.100 एक टेम्परेचर आपने लिया. ये दो टेम्परेचर आपने सिलेक्ट किए, लेट्स से. So an engine operating between 100 degrees Celsius, okay, this is I've converted now into Kelvin. A reversible engine operating between these two temperature scales, between two this temperature values, okay. ये जो हीट यहाँ पे रिजेक्ट होगी Q1 और रिवर्सिबल इंजन में हीट सप्लाई और रिजेक्ट होगी, उनका रेशियो जो होगा, इट हैज टू बी 273.15 plus 100 on 273. It has to be maintained. So that is what is the implication of this. So this comes out to be 1 point. All right. Now, let us understand, though, after completing the benchmark scale over here, let us understand the, after completing the absolute scale over here, let us understand the benchmark. So as I told you that maximum efficiency is equals to 1 minus T lower upon T higher. This would be our benchmark, and let us see how. देखिए समझते हैं. एक इंजन है, मान लीजिए 1000 केल्विन,
और कोई रियल इंजन है, it is operating between let's say 900 Kelvin and 300, and it is producing some work. अब इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो सकती है? 1 minus T lower 300 upon 900, and that boils down to 1 minus 1 upon 3, that is 2 by 10. So that is 66%, 67%. That can be the maximum possible efficiency. इससे ज्यादा efficiency नहीं हो सकती. कुछ भी कर लो तुम, friction भी हटा दो, सब कर दो, best 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 best. Though it won't be economical, but this could be the maximum efficiency of this engine. हाँ, और real efficiency जो होगी इस इंजन की real, वो हमेशा maximum से तो मान लीजिए आप किसी इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ काम करते हैं, दिस इज कमिंग आउट टू बी लेट्स से 0.66, एंड आपको इंप्रूव करना है इसकी एफिशिएंसी को, और करंटली आपकी एफिशिएंसी आ रही है लेट्स से फॉर एग्जांपल, रियल इंजन की एफिशिएंसी आ रही है लेट्स से फॉर एग्जांपल 40%, और अभी कितनी है आपकी 66.66%. दिस इज अ बेंचमार्क, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल. ओके, so we define the second law efficiency over here, that whatever is your current efficiency, that is 0.4, and what maximum you can reach boils down to 0.4 divided by 0.666666. That is approximately 60%. This is what we call as second law efficiency. तो आपको आपकी एफिशिएंसी करेंटली 40% है, और आपका जो इंजन है वो आप कितना तक ले जा सकते हो? 66-67% तक ले जा सकते हो. दैट्स इट. तो आपको ये नहीं देखना है कि आप कंपेयर, आप स्टूडेंट क्या करता है कि यार मैं अभी करेंटली 40% पर हूं, आई कैन रेज द एफिशिएंसी टिल 100%. नो नो, कैन नॉट. यू कैन रेज फॉर दिस एग्जांपल टिल 66-67% ओनली. है ना? रियल इंजन की एफिशिएंसी कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होगी. अगर कोई बोल रहा है ऐसा है, तो वो इंजन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो आपको फेक कर रहा है, वो आपको बेवकूफ कर रहा है. सिंपल. चलिए, ये तो इंजन की बात हुई. अब सिमिलरली हमने देखा था कल की क्लास में, we have devices called as refrigerator and heat pump. They were operating, they can be also reversible. There will be T lower, T higher over अब यहाँ पर हम अगर देखें एफिशिएंसी, सॉरी यहाँ पे सीओपी हम डिफाइन करें, सीओपी ऑफ अ हीट पंप. डिजायर्ड इफेक्ट क्या है हीट पंप की? हम जानते हैं डिजायर्ड इफेक्ट क्यूएच है, हमें हीट चाहिए. अपन वर्क क्या है आपका? वर्क है आपका, we know that QL plus W equal to QH will be QH minus QL, QH minus. Now for this, since this is a reversible heat pump, for that also, for reversible systems we can write, reversible operating on a reversible cycle, we can write TH upon TL is equals to QH upon, let's say equal to some constant C. अगर आप देखेंगे सीओपी ऑफ हीट पंप यहाँ पर आ जाएगा आपका T higher upon T higher. Similarly for COP of refrigerator अगर आप देखेंगे, this is maximum, okay, maximum. इससे ज्यादा सीओपी नहीं हो सकती, परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट इससे ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी का. रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो ये रेफ्रिजरेटर के केस में मैक्सिमम आएगा आपका T lower upon T higher minus. Okay. That's all.
Now, ये आपके लिए बेंचमार्क्स हो चुके हैं, ठीक है। तो बेंचमार्क क्या है आपके लिए, याद रखिएगा बच्चे। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हीट पंप, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल मैक्सिम एंड रियल thermal systems will have a value less than, chaliye, so without any waste of time further, we will proceed with chaliye. So this is a problem. Let us try this problem. An inventor claims that he has developed a power cycle capable of delivering a net work output of 410 kilojoule for an input energy of 1000 मतलब 1000 किलोजूल हीट लेके वो 410 किलोजूल ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, and the system undergoing the cycle receives the heat transfer from hot gases at a temperature of 500 Kelvin and discharges to the surrounding at 300, मतलब 500 से लेकर 300 पे दे रहा है. So let us draw the block diagram. So this is like your 410 kilojoule of work, and this is your 1000 kilojoule of heat supply.
Now what would be the rejected finite? अब इसका क्लेम इवैल्यूएट करना है आपको, आपको बताना है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। देख लीजिए, अगर ये सच बोल रहा है तो इस इंजन की जो एफिशिएंसी है, रियल इंजन की, कितनी है भाई? 1 - रिजेक्टेड अपॉन सप्लाई, तो कितनी आती है? वही 410 अपॉन 590, मतलब वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, सो 41%। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है वो भी चेक कर लो, मैक्सिमम हो सकती है 1 - टी लोअर अपॉन टी। कितना आता है? 200/500, 2/5, 0.4। मैक्सिमम 40% हो सकती है भाई, और ये क्या कह रहा है, 41% रियल की होगी। दैट इज, आई डोंट बिलीव कि ये सच बोल रहा है, सो आई रिजेक्ट हिज क्लेम। सो क्लेम रिजेक्टेड। Let's do this. So this kind of simple problems help your understanding for the summer. Let us proceed further for a few more questions. By steadily circulating refrigerant at a low temperature through the passage in the walls of a freezer compartment, a refrigerator maintains the freezer compartment at -5 degrees Celsius. तो ये -5 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया हुआ है। इसको हम केल्विन में ही कन्वर्ट करके लिख देते हैं। अब 273 भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द एयर सराउंडिंग द रेफ्रिजरेटर इज, बाहर की हवा 22 डिग्री, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हीट अंदर आ रही होगी। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फ्रीजर कंपार्टमेंट, रेफ्रिजरेंट, आप देखिए, आप समझते हैं रेफ्रिजरेटर कहाँ फ्लो होता है, यहाँ पर फ्लो होता है। ये रेफ्रिजरेंट को कितना दे रहा है? 1000 kJ/h। Okay, and the power would required to operate the refrigerator is 320 kJ। डेफिनेटली इसको रिजेक्ट करना पड़ेगी, हीट अपनी बाहर सराउंडिंग्स में। Your surroundings are at 22 + 270. Determine the coefficient of performance of the refrigerator and compare it with the COP of a reversible refrigeration cycle operating between the reservoirs in the same। मतलब रियल और बेस्ट जो बेंचमार्क हो सकता है, हमें दोनों को कंपेयर करना है। So let us understand। सीओपी क्या होता है? सीओपी होता है सर डिजायर्ड इफेक्ट। रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड इफेक्ट ये होगा अपॉन वर्क इनपुट। तो ये तो सीओपी आ गया आपका रियल का। दैट इज 2.5। सीओपी मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लो।
So what is T lower? 273 minus 5. That is 268. And over here, 22 and minus 5, 27. That boils down to 9.9259. तो ये मैक्सिमम हो सकता है, मतलब इतना स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है. तो दिस इज शोइंग यू द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. ये जो रिवर्सिबल इंजन और रिवर्सिबल प्रोसेसेस हमने सब डिफाइन करे, ये सब आइडियल चीजें हैं. थ्योरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. बस इनका क्यों इंट्रोड्यूस करें, ताकि हम हमारे करंट सिस्टम जो कि इरिवर्सिबल है उसे देख पाए कि वो कितने पानी में. दैट्स इट. सो दैट्स व्हाट इज आवर होल पर्पस बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग ऑल दोस थिंग्स. ये तो बेसिक कुछ क्वेश्चन करे हमने सॉल्व करते हैं. A heat pump is used to meet the heating requirement of a house. तो अभी हीट पंप के ऊपर क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन हीट इंजन के ऊपर था, फिर रेफ्रिजरेटर, फिर हीट पंप. A heat pump is used to meet the heating requirement of a house and it is has to maintain at 20 डिग्री सेल्सियस. तो भाई घर है हमारा, इसको हमको 20 डिग्री में मेंटेन करके रखना है, जब बाहर का टेम्परेचर -2 डिग्री, ये माइनस है. इसमें 73 ऐड करना पड़ेगा यहाँ. हाउस इज एस्टिमेटेड टू लूज हीट एट द रेट ऑफ, मतलब ये हाउस क्या कर रहा है, देखो बाहर -2 डिग्री सेल्सियस है, तो हायर टू लोअर हीट ट्रांसफर होगी नेचुरली, और इस रेट से ये हीट ट्रांसफर किलोजूल पर. इफ द हीट पंप अंडर दिस कंडीशंस हैज अ सीओपी ऑफ 2.5, डिटरमाइन द पावर कंज्यूम्ड बाय द. भाई इसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? 2.5. अब अगर आपको इसे मेंटेन करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको 80 किलो जूल पर आवर इतनी हीट देना पड़ेगा, तभी तो ये मेंटेन रहेगा स्टेडी स्टेट में. अगर ये बाहर जा रही है इतनी, तो इतनी आपको देना भी पड़ेगा. तो ये तो भाई आपका पहला पॉइंट है. अब हम जानते हैं कि सीओपी की वैल्यू होती है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट. डिजायर्ड इफेक्ट यहां पर क्या है आपका सर? डिजायर्ड इफेक्ट है हमारा, हीट पंप का डिजायर्ड इफेक्ट होता है 80,000, और वर्क इनपुट कितना है? वर्क इनपुट है आपका, ये तो हमको निकालना है, ये किलो जूल पर आवर. आप यूनिट चेक कर लिया तो उसमें आएगा आपका आंसर. आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा 32,000 किलो जूल पर आवर, और इफ यू डिवाइडेड बाय 3600, it's 8.86, 8.89. Now, next is the rate at which heat is absorbed from the cold outside outdoor air. मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है क्यों.
भी निकाल सकते हो। आपको वर्क पता चल गया 32,000 किलो जूल पर आवर। यूनिट देख लीजिएगा एग्जाम में कौन सी पूछी है आपसे। यू नो दैट क्यूएल प्लस वर्क इनपुट, दिस विल टोटल गिव यू 80,000 किलो जूल पर। So how much is that one? 32,000, right? That is 48,000. This is how you can actually calculate the energy required or power required and the energy per unit time absorbed from the sun. So 48,000 kilojoule per hour is what has been taken from the surrounding. Plus, we are doing some work that is 32,000. So, sum total of it, that is 80,000, has been given to the system by the input. So, definitely, this is not a reversible because in order to be reversible, इसका COP reversible का कितना होता है चेक कर लीजिए. T higher, 20 plus 273 upon T higher minus T lower, that is 20. 293. 13.3 और ये तो सिर्फ अभी 3.5 पर ही ऑपरेट कर रहा है, 2.5 पर ही ऑपरेट। सो दिस कुड हैव बीन द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यूज मत कर लेना जब तक दिया ना जाए। दिस इज जस्ट आउटसाइड। So these were the three problems I have explained over here and how to deal with different systems. Next, we'll just before that I'll take a 5-minute break and then we'll start.
चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए तो बेसिक बात हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखते हैं कि रियलिटी में जो प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो उस इरिवर्सिबिलिटी को मेजर कैसा किया जाए? मतलब हो सकता है एक इंजन कम रिवर्स इरिवर्सिबल हो, एक इंजन ज्यादा इरिवर्सिबल। ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्वांटिफाई irreversible. So let us begin with that. Keeping that in mind, I will begin my discussion. चलिए, so let's understand how to calculate irreversibility और क्वांटिफाई। अभी हम क्वांटिफाई करेंगे एग्जैक्ट कैलकुलेशन थोड़ी देर क्वांटिफाई। First, I'll take an example of reversible heating, which is not a reversible, which is a reversible one. Reversible heat engine, both internally and externally reversible. In a sense that I'll explain. So let us say that this is our engine operating like this. और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है T, लेट्स से H, और ये हीट ट्रांसफर कर रहा है इसे, and this temperature is T. Let us say that this is QH is the heat transfer and QL is the heat transfer, and this is the work. अब ये रिवर्सिबल कैसे हुआ? देखो, इसको रिवर्सिबल होना है तो इसे एक्सटर्नली भी रिवर्सिबल होगा और इंटरनली भी रिवर्सिबल होगा। इंटरनली मतलब, एक्सटर्नली मतलब क्या? उसके लिए मुझे बाउंड्री डिफाइन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये बाउंड्री, तो अगर आप ध्यान दें तो बाउंड्री की ये जो लोकेशन है, दिस लोकेशन, यहाँ पर हीट आ रही है, बेसिकली बॉयलर हीट ले रहा है और यहाँ पर कंडेंसर हीट रिजेक्ट कर रहा है। अब चूंकि हीट ट्रांसफर रिवर्सिबल है या आपका इंजन रिवर्सिबल है, तो यहाँ पे जो बाउंड्री का टेम्परेचर है वो भी बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब TH माइनस DT होना चाहिए, तभी जाके ये हीट ट्रांसफर रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर होगा। मतलब मैं इस प्रोसेस को रिवर्स कर दूंगा, सो इट वोंट लीव एनी ट्रेस ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। और यहाँ पर जो होगा वो होगा TL प्लस DT। So this is what exactly we have understood over here कि reversible का मतलब क्या होगा, कि externally also there is a heat transfer which is occurring in the reversible manner, and internally also there is no friction and the things are going on very well. यहाँ पर हम दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वुड बी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq, सेकेंड साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by dt। Now, how to do that? चलिए पहले साइक्लिक इंटीग्रल देखते हैं। तो यहाँ पर ये साइकिल है, साइकिल में QH और QL गया। So what is QH minus QL? So QH minus QL is nothing but अगर आप फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो QH आया और W plus QL गया। QH minus QL is nothing but work. So this is equal to work. This work done greater than zero और मे बी इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो कब होगा? जब ये डिफरेंस होगा, QL
is very less than 1, then W may be equal to 0 in a limiting case. ये difference कब less than 1 होगा? मतलब जब TH and TL are almost same. तो जब TH और TL almost same होंगे तब मैं कह सकता हूं कि work done जो होगा that would be greater than or equal to 0. All right. Now, next will be the greater than 0 तो आप समझ ही गए. अब मैं निकालना चाहूंगा cyclic integral of dq by dt. What is T over here? Temperature of boundary. This boundary. So this is QH by TH minus dt. This would be my, it is getting out QL TL plus. Now just to remind you, my dear friends, that this dt can be neglected in front of TH and this dt can be neglected in front of TH because it's very negligibly small. So neglecting dt in front of TH and TL, you'll get a cyclic integral of dq by tv. Since this is a reversible one, QH, I'll writing QH over here, TH. And we know that because for reversible QH by TH minus equal to QH by TH, so this would be equal to 0. So for reversible heat engine, cyclic integral of dq by tv is equal to 0. And cyclic integral of dq is greater than 0. Let us do the same thing for reversible refrigerator or reversible heat pump. So let me write it over here. So this is of course your temperature of boundary over here. And this is T lower and this is T higher. Since the heat pump is also reversible, तो ये जो temperature होगा it is TL minus DT over here और ये जो temperature होगा ये TH DT. High to low heat transfer होता है. Heat is getting transferred with a very finite, very infinitely small temperature difference. That's why the system is externally reversible. And since there is no friction internally, that's why we can call it as internally reversible. Having said that, again I'll evaluate a cyclic integral of dq over here. And that would be like this is QL and this is QH, of course. And there will be work input over here. So this is supplied to the system, so QL is positive over here. And QH is rejected by the system, so it is negative over here. And by first law, we know that QL plus W is equals to QH. So immediately I can write QL minus QH equal to minus W. And this gives me minus W over. This simply means that this quantity is cyclic integral of dq. Sorry, there will be a is less than 0. And a limiting it would be equal. So for reversible heat engine, it was greater than 0, and for reversible heat pump, cyclic integral of dq is less than equal to 0. So
This is not common for them, right? Let's check whether cyclic integral of dq by t for this reversible cycle comes out to be what. So I can write it as a QL is what we are supplying. And temperature of the boundary, of course, will be taken care over here. It will be TL minus dt. तो ये वो टेम्परेचर है जिस बाउंड्री पर हीट ले रहा है सिस्टम, मतलब ये वो टेम्परेचर है सिस्टम की बाउंड्री का जहां पर वो हीट एक्सेप्ट कर रहा है. And QH would be rejected 1 upon TH plus. Again, I'll write the same statement that dt and can be neglected in front of TL, and we'll get QL upon TL equal to minus QH upon TH. And by the previous discussion, we know that Carnot's theorem, we have derived that QL upon TL is equal to QH upon TH only for reversible, okay? So I can write it equal to 0. So what is the observation over here, that cyclic integral of dq by tb for reversible processes is 0. So cyclic integral of dq by tb is more fruitful because it is common for both heat pump and for that your heat engine. But cyclic integral of dq is different for different power absorbing and power producing devices. Therefore, I think this would be much better criteria for understanding reversibility or irreversibility conditions. And these things would be more clear with the third example, because in the third example, I'm going to construct an irreversible heat engine. So my third discussion would be with irreversible heat engine. So I write over here irreversible heat engine. Okay, for matter of comparison, I can keep at same. I can supply same amount of heat, which and now this time work will be different because this is irreversible, right? So I'll write work irreversible. Now, what I'm saying is, just listen to it very carefully, that this engine actually is externally reversible, but internally irreversible. इसका मतलब क्या, और इसका मतलब हुआ कि ये irreversible, even a irreversibility present within the system will make it irreversible. इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो तो infinitely very small temperature difference हो रहा है, but within the system there is lot of friction and therefore there will be losses. तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो TH माइनस dt होगा, और यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ का टेम्परेचर TL प्लस, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ये वर्क अलग है तो यहाँ पर जो हीट रिजेक्ट होगी वो भी अलग होगा. Call it as so let us evaluate cyclic integral of dq over here, and it is nothing but QH minus QL irreversible. This can be greater than or equal to 0. अच्छा, ये greater than 0 मतलब this is because is equal to 1. This can be greater than equal. ये greater than 0 क्यों हो सकता है? ये greater than 0 तब हो सकता है when it is producing a network, जैसे हमारी गाड़ियां करती है फॉर एग्जांपल. इक्वल टू 0 कब हो सकता है कि सारा का सारा हीट जो सप्लाई किया वो फ्रिक्शन में ओवरकम हो. दैट कैन बी वन पॉसिबिलिटी. तो रीजन दोनों जगह अलग अलग है. पहले केस में वो रिवर्सिबल था तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर बहुत कम होगा टीएच और टीएल के बीच में तब वो 0 हो सकता था. यहाँ पर फ्रिक्शन कैन सक और कैन एब्जॉर्ब ऑल द हीट, ऑल द वर्क प्रोड्यूस्ड इफ द हीट सप्लाइड इज नॉट दैट अमाउंट. यहाँ पर भी आप साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे करोगे?
जस्ट रिमाइंड, QH बाउंड्री का टेम्परेचर लिखेंगे यहाँ पर हम TH माइनस DT. This is accepted, this is positive, minus rejected QL irreversible on TL plus. Now you need to observe very important here. Like देखिएगा, ठीक है, बिकॉज अंदर से सिस्टम इरिवर्सिबल है, फ्रिक्शन है, तो लॉसेस होंगे. तो जो W इरिवर्सिबल होगा से is equals to W irreversible plus QL irreversible. Right. QH was also equal to W reversible plus QL. This is reversible. We have not mentioned it, but yeah, of course, this is reversible. तो यूज करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 100 है, ये 60 है, 40 है, ये 100 है, ये 30, ये कम का, मतलब जो हीट रिजेक्ट होगी वो ज्यादा होगा, डेफिनेटली कॉमन सेंस है यहाँ पर. मतलब अगर DQ TB रिवर्सिबल से कंपेयर करें, क्या था, TH माइनस DT माइनस QL रिवर्सिबल था, ये TL प्लस, तो दिस वाज नॉट टू बी जीरो. अब यहाँ पर जो क्वांटिटी प्रेजेंट है वो इस क्वांटिटी से बड़ी है. ये जब जीरो था तो ये माइनस ये क्या होगा, लेस देन जीरो. साइक्लिक इंटीग्रल Q by TB is less than equal to, is less than zero, sorry, not equal to, less than. And the similar thing will happen with the heat pump also. Let's not do it again and again. So what I'm trying to say over here is that जितना ज्यादा ये हीट इंजन इरिवर्सिबल होगा, उतना कम ये वैल्यू होगा W इरिवर्सिबल का, और जितना कम W इरिवर्सिबल होगा उतना ज्यादा QL इरिवर्सिबल होगा, और जितना ज्यादा QL इरिवर्सिबल होगा उतना ज्यादा नेगेटिव ये वाली क्वांटिटी. So the extent of this negative value over here will actually measuring the amount of irreversible. So I'll write this. More our engine is irreversible, more will be, less will be, एक मिनट ऐसा लिख देते हैं, मोल विल बी QL irreversible and more negative will by T. मतलब अगर मैं कहूं आपको कि इसे मैं इक्वेट करूं और इसे मैं सिग्मा के बराबर लिख दूं, तो यहां पर ऐसे लिखूं मैं इसे माइनस सिग्मा. तो सिग्मा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है विच इज ग्रेटर देन जीरो, और जितना ज्यादा इरिवर्सिबल होगा, मोर द इंजन इज इरिवर्सिबल, मोर द इंजन इज इरिवर्सिबल, more will be the irreversible, more will be the value of. यहाँ पे सिग्मा एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी मदद से हम
irreversibility calculate. This sigma, we'll talk about it, इसे हम क्या कहते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि साइक्लिक, अगर मैं इसे इन जनरल लिखना चाहूँ, cyclic integral of dq by t, where v is the boundary temperature, is less than 0, is less than or equal to 0. Equality holds when the process is reversible, and inequality holds when the process is irreversible. This inequality, which measures or which quantifies the irreversibility, is known as Clausius inequality, one of the most important inequality in thermodynamics, associated with second law. But usually engineers are not used, are not, like, क्या बोलना चाहिए, used to dealing with inequalities. Not engineers means in simple language. I'm not talking about engineers in general sense. I'd say it's much better कि अगर हम इस inequality को equality में convert कर लें, तो ताकि समझ आसान हो सब्जेक्ट की. dq by dv plus sigma is equals to, अब सिग्मा अगर जीरो है मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल है, और सिग्मा अगर ग्रेटर देन जीरो तो irreversible. So this is this is the inequality, and this is the equality we have converted. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो रिवर्सिबिलिटी ये सिस्टम के बाउंड्री के अंदर की है. तो this basically measures, the sigma measures irreversibility. इरिवर्सिबिलिटी को हम आई से डिनोट करेंगे, और आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा इंटू डेल्टा टी. वो लेटर ऑन आएगा, बट सिग्मा अगर आपने पता कर लिया है तो कहीं ना कहीं आपने आई भी पता कर लिया है. नॉट सिग्मा इंटू डेल्टा टी, सिग्मा इंटू टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर, राइट? सो सी टू इट लेटर ऑन. सो मेजर्स इरिवर्सिबिलिटी आई, एंड सिस्टम की बाउंड्री के अंदर की रिवर्सिबिलिटी को मतलब याद रखिए. दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम देखें कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t b फॉर रिवर्सिबल इज 0. इसका मतलब क्या? लेट अस अंडरस्टैंड. कोई भी प्लॉट है, कोऑर्डिनेट्स है, 1 to 2 गया बाय सम पाथ ए, और मैं आया to 1 by to 1 by some path, or reversible. For the closed cycle AB, I can write dq by db for 1 to 2. This is for A, I write A, plus 1 to 2, 2A to 1A, dq by db. This quantity is equal to 0 because this is a reversible cycle. So this is reversible, that makes sense. Again, if I write over here 1A to 2A, dq by db plus 2A to 1A. Oh, sorry. अब path C ले लेते हैं. Oh, I'm sorry. 2 to 1 would be by path B. 2 to 1 next problem. Right.
अगर आप देखें इन्होंने इक्वेशन को कंपेयर करें तो यू विल सी दैट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ टू बी मतलब 2 से लेकर 1 तक अगर बी के थ्रू जा रहे हैं या फिर आप सी के थ्रू भी जा रहे हैं 2 से 1 मतलब 2 से 1 चाहे बी से जाए चाहे सी से रिजल्ट मतलब फॉर रिवर्सिबल राइट दिस इज फॉर मतलब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी फॉर अ रिवर्सिबल इज अ पॉइंट फंक्शन क्योंकि वो सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है पाथ पे डिपेंड नहीं है दैट इज व्हाट आई मींट बाय since it is a point function this must be a property because properties in thermodynamics are a point function and we define this property as yeah dq upon dv for reversal is and this s is known as entropy. We'll talk about entropy in more detail. Right now, I've introduced this word with you. Entropy has a very deep meaning in thermodynamics also, and in other physics, in other physical problems, or maybe other, maybe your day-to-day philosophical issues also. But right now, we have just defined it mathematically, and we will further extend our discussion. And later on, we'll get into the physical meaning of entropy. Okay, now. So what exactly it means is that if you want to calculate a change in entropy, so let's say you want to calculate S2 minus S1, then it will be equal to integration of dq reversible like, from 1 to 2. So let's say this is 1, this is 2. Now, of course, you can calculate S2 minus S1 by doing integration over this path. Okay. And you can calculate. So once you calculate S2 minus S1, by this reversible path. This is a reversible path. So whatever I'm showing with a solid line is a reversible one. And whatever I'm showing between 1 and 2 by dotted lines is of course irreversible. Right? So 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 by all these irreversible paths would be same. Because change in entropy uh, depends upon the point functions, right? Depends upon the endpoints. So it doesn't matter whether you want to calculate it for reversible or whether you want to calculate it for irreversible. क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है ये डेफिनेशन देखते ही कि सर मतलब चेंज इन एंट्रोपी हम सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिफाइन करते हैं नहीं ऐसा नहीं है चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए डिफाइंड है बट अगर आपको चेंज इन एंट्रोपी निकालना है तो आप पहले रिवर्सिबल पाथ बनाइए उन दो पॉइंट्स के बीच में entropy change calculate करिए the same would be the change in entropy for the irreversible path also so this equation doesn't mean that this does not mean that change in entropy cannot be calculated
for irreversible process. For calculating change in entropy for irreversible process, construct a reversible path between the same state points and calculate change using let's say we call this expression. So ठीक है, ये this is something clear. Now we know ds is equals to dq reversible by dv, and let us say that if the process is just a minute. I'll come back to that. Okay, yeah. So yeah, from here I'll take this inequality over here more time, and I like to have some comments upon it. So ds equal to dq reversible upon dv. Okay, and we know that cyclic integral of dq reversible upon dv equal to 0. So I can write cyclic integral dq reversible upon dv equal to यहाँ अगर हम इसे रिवर्सिबल हटा देते हैं फॉर अ टाइम में, तो ये फिर हमें मेंशन करना पड़ेगा दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, राइट. सो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी बी इज लेस देन इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी एस, राइट. एंड डी क्यू बाई टी बी is less than equal to ds. This is another way of writing the whole equation, and this can be written further as sigma equal to this. So this is less than this, right? So you add some positive quantities. So sigma is greater than 0 if the process is irreversible. Sigma is equal to 0 if the process is reversible. And nothing great change I have done. So if the process is reversible, ds equal to dq by 2b, and ds equal to dq by tb. And if the process is reversible, then ds is sigma plus this. Okay, and of course, this is a finite over here, so I'll just use an integration sign so that the things match up over here. We can write d sigma. That's the important, very important equation. इसे हम हमेशा साथ में रखेंगे. इसका मतलब अगर आप इसे सॉल्व करते हो 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, तो दिस विल गिव यू बेसिकली s2 minus s1, and this term explains entropy transfer because of heat transfer. So it's like entropy in minus entropy out plus entropy generated
is equals to change in entropy of the system. Like this is like that. So because whenever you transfer heat to the system, uh, it's like entropy of the system increases. Whenever the heat is rejected, entropy of the system decreases. I'll explain that in detail. Just give me some time over it. We'll come back to this equation and understand this physics. Just give me 5 minutes so that we'll start again for the future. We'll take a 5 minute break.
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक स्पेशल केस देखते हैं, स्पेशल केस इन द प्रोसेस, वी कॉल इट एज अ राइट, आई लाइक अ प्रोसेस रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक। इसके बारे में बात करें, चलिए तो डिस्कस अबाउट रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक फॉर नाउ। तो रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक अगर है तो हमारे पास इक्वेशन है dq by tb प्लस सिग्मा इक्वल टू ds। रिवर्सिबल है तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, और एडियाबैटिक है तो ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। एडियाबैटिक का मतलब कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इसका मतलब ds इज इक्वल टू जीरो, मतलब एट ईच एंड एवरी पॉइंट एज इज कांस्टेंट। ऐसे प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। चलिए लेट अस टॉक अबाउट रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस। In fact, before that, I'll complete one more concept so that it would be much easier for us to understand this. Okay, चलिए पहले एक concept और देख लेते हैं, then we will definitely proceed for that. Okay. So let me define some TDS equations first. We call them as property relations. So how do we do it? See, if you use the first law says that dq equal to du plus dw. This is the first law. Right? Now, for a reversible process where work done is the only boundary work, okay, with only boundary work, as the dominant work, yes, with only boundary work is also sufficient. So I can write, we know that dq reversible, because the process is reversible, I'm writing reversible over here, and dv will be pd. This is the boundary work for reversible process, right? Now, dq reversible equal to du plus pdv can be written as dt pds, because we know that dq reversible upon t is equals to s, sorry, equal to ds. Having said that, this would be equal to pdv like this. Okay. So TDS equal to du plus pdv is one relation which is of great importance in that. So although this equation has been derived using a reversible process with only boundary work, but it can be used for irreversible also. कैसे? सेम कॉन्सेप्ट है कि आप 1 और 2 के बीच में अगर आपको चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है, तो पहले तो आप एक रिवर्सिबल अज्यूम करिए उनके बीच में, उससे आप कैलकुलेट करिए, एंड द चेंज बी सेम
by the irreversible between the same 2 points by a reversible path also. That is one thing. So loosely you can say that people say that it is applicable for all process. उसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में ये टू वे प्रोसेस है. आप पहले 1 से 2 रिवर्सिबल के लिए निकालिए और जो रिवर्सिबल के लिए आएगा वो इरिवर्सिबल के लिए होगा सेम टू स्टेट पॉइंट्स के बीच में. तो ये सॉल्व तो सिर्फ रिवर्सिबल पे ही होगा. Are you getting this? You can solve it only for a reversible process because you have defined it for a reversible process. Reversible process में ही आपको पाथ पता होता है, राइट? बट एक बार रिवर्सिबल के लिए निकाल लिया आपने तो सेम चीज आप इरिवर्सिबल के लिए बिटवीन द टू सेम स्टेट पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हो. That's what I'm trying to say. इसमें कुछ चेंजेस करें हम तो हम जानते हैं कि जो H होता है वो U प्लस PD होता है एंथैल्पी. तो मैं DH को लिख सकता हूँ DU प्लस PdV प्लस VdP. यहाँ पर हम DU प्लस PdV को कर सकते हैं DH माइनस VD. TDS आ जाएगा आपका DH माइनस. This is another very important equation over here. चलिए मैं थोड़े से पेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पर. Now, अगर हम आइडल गैस की केस देखें, आइडल गैसेस जो कि फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं, आइडल गैसेस, एयर इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडल गैस अप्रोक्सीमेटली. तो जो U और H होते हैं दे आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली एंड PV इज इक्वल टू specific volume. So I can write a TDS equal to DU plus PdV. TDS equal to DU की जगह आप लिख सकते हो CV dt और PdV की जगह आप लिख सकते हो PdV रहने दीजिए. फिर हम DS को लिख सकते हैं CV dt अपॉन T प्लस P by T. P by T is R by V. So DS equal to CV dt plus if you assume CV to be constant, then this can be written as S2 minus S1, one setting, one setting, one setting, ln T2 upon T1 plus R ln V2. यही बात कह रहा था. देखिए अब 1 से 2 अगर आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पता है, अब चाहे ये प्रोसेस रिवर्सिबल के लिए हो चाहे इरिवर्सिबल के लिए हो, उससे क्या फर्क पड़ता है. आप इसे यूज कर सकते हो रिवर्सिबल के लिए. उसी के बीच में एक रिवर्सिबल पाथ आप इमेजिन करके अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं. Next is a TDS equal to DH minus VDP. So TDS equal to CP dt minus VDP. So DS equal to CP dt upon T minus V upon T dP. And you know that V upon T is R upon T.
ds equal to cp pp upon t minus r upon t. Integrate this 1 से 2 1 से 2 1 से 2. You get s2 minus s1 equal to cp ln t2 by t1 minus r ln t2 by t1. Again, a very important and a very useful equation for calculating change in energy for an ideal gas. This is applicable, of course, for an ideal gas. I'm just highlighting these equations. So this is, of course, for now. प्रोसेस के बारे में कुछ और बात करते हैं. Let us write down the heading. Reversible and adiabatic process of an ideal. तो आइडियल गैस की तरफ के लिए हम बात करते हैं. I can of course use an equation TdS equal to du plus pdv और रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक है इसलिए ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि डीएस जीरो हो जाएगा. आप जानते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम वुड बी जीरो फॉर रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक. तो दिस इज जीरो बिकॉज ऑफ रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक. I can write du as mcv dt, and if I'm taking mass over here, this will be volume then in that case. Okay, so I take this as volume, no problem. And this is pdv, of course. So it's a mathematical derivation, and we have equation of state as PV equal to MRT, and if you differentiate it, you get PdV plus VdP plus, sorry, equal to MR is constant dt. So from here you can substitute dt over here, you'll get 0 equal to PdV plus VdP upon MR into MCV plus PD. So over here you will see that MM goes away. And if you proceed further, we can write 0 equal to PdV plus VdP, and this is CV over here plus P into R into dV. This is equal to 0. Yes, so PdV we take common. So we have CV plus R plus CV VdP, right? मैंने आपको डेराइव किया था पहले भी CP माइनस CV इक्वल टू R. मैं यहाँ पे कहीं पे भी अज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि CP CV कांस्टेंट है, ठीक है, बट स्टिल CP माइनस CV ये डिफरेंस हमेशा आ रही रहेगा, चाहे ये वेरी करें या कुछ भी करें. इसे मेयर्स रिलेशन कहते हैं, फिर रिमेंबर दिस. तो CV plus R is CP, so I can write as CP PdV plus CV VdP equal to 0. And if I take this part over here,
Cp minus Cv equal to R and Cp upon Cv equal to गामा। अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हो Cv equal to R upon गामा माइनस वन। सिंपल, मैं स्कूल में आपने कैलकुलेशन भी किए होंगे और there's nothing great। A substitute over here, I'll get PdV plus CV। CV की जगह मैं लिख सकता हूँ RV dP upon गामा माइनस। And just a minute, in fact, what we can do is आप CP जस्ट अगर हम इसे लिख दें यहाँ पर CP CV की जगह आप लिख सकते हो CP upon gamma। CP goes away, you have PdV plus VdP upon gamma। Just have to solve this now। PdV equal to VdP upon gamma with a minus। We place P over here, we place V over here। Right. If you integrate this, you'll get log V equal to minus log P। Just a minute। Gamma X, right? Log V plus gamma log P। Gamma will be over here. Sorry. So in fact, you can write like this: gamma will be over here, or gamma will be over here. Same. Plus some constant। So this can be written as PV की power gamma equal to constant। So this is applicable for reversible and adiabatic process or ideal levels। Okay, so this gamma is what? This gamma is nothing but Cp upon Cp। This gamma can vary depending upon the value of Cp and Cp। Okay. And if you want to calculate boundary work over here, so your boundary work will be PdV, which is equal to integration of PdV, which is integration of PV की power gamma into dV। Okay, and this will be of course equal to, if one say 2, so this is P1 V1, yeah, P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus। Okay, this is for constant। ठीक है, so please this is important relation PV की power gamma। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था ये। Not exactly first lecture, but yeah, in between some lecture I have taught you the process over here। ठीक है, और how to draw
next topic, we have some time left. So how to draw Carnot cycle on TS plane. So this is your TS plane. Now, what are the four processes over there? First, 1 to 2 is isothermal expansion. 2 to 3 is isothermal. No, sorry. Adiabatic expansion, reversible and adiabatic expansion. मतलब isentropic. 3 to 4 is again isothermal compression. And 4 to 1 is and adiabatic compression. So how can you think of a process like this? ठीक है, टीएस प्लेन की खूबसूरती है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो 1 to 2 है आपका, अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डेफिनेटली यू आर सप्लाइंग हीट, सो इफ यू सप्लाई हीट एंट्रोपी विल इंक्रीज, सो दैट्स व्हाई आइसोथर्मली 1 to 2 will go like this. Then 2 to 3 it's reversible and adiabatic, मतलब it's an isentropic process. अब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन अगर है तो डेफिनेटली आपको हीट ट्रांसफर तो अलाउ कर नहीं रहे हो, तो एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा आपका? टेम्परेचर ड्रॉप होगा. सो 2 to 3 टेम्परेचर. Then 3 to 4, if we talk about, just opposite of isothermal expansion, there will be compression. So to maintain the constant temperature, we'll have to reject some heat, and in the quest of rejecting some heat, entropy will decrease. And 4 to 1 will complete the cycle by compression. So if you, without transferring any heat, if you compress the gas, its temperature will increase. That's how it is. Since it's an isentropic process. Okay, next point I like to add over here is that, so we know that dq reversible is equals to TdS. So this is T and ds. So figure it for let's say 1 to 2. So you'll get Q supplied. Basically, you are supplying heat over here, right? Supplied heat would be equal to T S2 minus S1. Let us say that this is P higher. Similarly, heat rejected over here is T lower, let's say for example, S3 minus S1. So efficiency of this cycle is 1 minus T lower upon 1 minus Q rejected upon Q supplied. Rejected is of course TL S3 minus S4, T higher, S2 minus S2. And 2 and 3 are having same entropy, 1 and 4 are having same entropy, right? So S2 minus S1 and S3 minus S4 are same. And these guys will cancel off with each other. And you will have efficiency as 1 minus T lower upon T as discussed. And one more thing, what is the work done?
before that, if you see QS, so QS would be designated by this yellow area. THS2 minus H2 graphically. And what is QR? TLS3 minus S4. This is dedicated by this. And QR is network, which is this area. So this area also represents network or summation, whatever. So area under TS diagram represents network or net heat transfer, whichever way you like to like it. So this is all for today. I'll see you in the next lecture. In the meantime, I'll upload the notes. I'll print it out and upload the notes. And for that, I'll stop the recording because that is not important for you.